समाटीर आमी सन्तान माटिया ममा पानी पवन आम जीवन सबु तोर दान विरलता अखण्डता सुन्दरता मधुरता प्राचीनता सभ्यता ए देश माटीर आमी सन्तान माटिया ममा मातृभूमि वंदे सुंदर सुकमल तुमरी अरविंदे जननी जन्मभूमि मातृभूमि वंदे सुंदर सुकमल तुमरी अरविंदे जननी जन्मभूमि मथा परे हिमालय गिरिराज विराजे पद तले महोदधि मथा पिटी गरजे मथा परे हिमालय गिरिराज विराजे पद तले महोदधि मथा पिटी गरजे गंगा जमुना दे सता सतन दान दे गंगा जमुना दे सता सतन दान दे गाय तोर वंदना कला नीना दे जननी जन्मभूमि मातृभूमि वंदे सुंदर सुकमल तुमरी अरविंदे जननी जन्मभूमि सुजल सुफलतारे चिर सस्य श्यामला गिर प्रसविनी तुहि संतान वत्सला सुजल सुफलतारे चिर सस्य श्यामला गिर प्रसविनी तुहि संतान वत्सला शान्तिर स्वर ध्वनि मैत्रीर मदाकिनी शान्तिर स्वर ध्वनि मैत्रीर मदाकिनी सन्तान लागे सदा प्रवाहित तंगे जननी जन्मभूमि मातृभूमि वन्दे सुन्दर सुकमल तुमरी अरविंदे सुन्दर सुकमल तुमरी अरविंदे सुन्दर सुकमल तुमरी अरविंदे। Good evening everyone, respected teachers and my dear friends. I am Somyank and today we are celebrating Netaji Jayanti. Today I want to give a speech on the great freedom fighter Subhash Chandra Bose. He played a crucial role in the freedom struggle against the British rule. He was born on 24 January 1897 in Cuttack, Odisha. His father's name was Janakinath Bose and mother's name was Prabhavati Devi. He devoted his life into our motherland. He was the one who formed the Azad Hind Fauj and led it to our freedom. It is said that he died in a plane crash in 1945, August 18th, which is still a controversy till now. He gave the famous slogan, "Scream it loud and I shall give you freedom." Enjoy.
Today is also the birth anniversary of a great freedom fighter, Veer Surendra Sai. We should idolize them and try to be like them. Jai Hind, Vande Mataram.